Well, there are some drawbacks to it also. There are some fallouts that we must be wary about. Busy schedule at times means changed lifestyle, rush, rush, rush all the time, and that, the heart of the matter, is not in the right frame, in the right aspect at that time. We are discussing the heart issue, the core of the issue, how to keep our heart healthy. Small, healthy changes in our daily routine can decrease the risk of heart disease, and making changes is always challenging. From our busy schedule, it's very difficult, and it has become a constant, common refrain कि मेरे पास तो time ही नहीं है. This is a special show for you, for all of us who try to figure out what risk factors we should be focusing on first and set the goals that we want to reach. Also, the new challenges that have come across vis-a-vis the COVID-19 factor. How does it impact our health? How does it impact our heart? And all the changes and all the incidents that we are witnessing of late. People dying young, falling off the treadmill. And what is it that is causing this imbalance? To discuss this further, I have an eminent panel of guests with me, and it's my honor to welcome Dr. Hemant Madan, Senior Director and Program Head, Cardiac Sciences from Narayana Health, Dr. Pradeep Kumar Nayak, Senior Consultant, Cardiology, Narayana Health, and Dr. Samir Kubba, Interventional Cardiologist, Narayana Health. Gentlemen, thank you so much for taking time out and speaking to News9 Live. Dr. Kubba, let me begin with you first. Talking about the changing trends, talking about the challenges that we are seeing these days as far as the health of the heart is concerned. What is it, what comes to your mind that you would tell a patient or a person like me who doesn't exercise that much? What would be your first suggestion to it? So I think there's a saying, if you don't have time for exercise, you will have to spare time for disease. Absolutely, very clear. जैसे आपने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो एक जनरल कल्चर है आजकल कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है. देखिए, ये प्रायोरिटीज़ का मैटर होता है जी. अगर आपकी प्रायोरिटी है हेल्दी लिविंग तो आप टाइम निकालेंगे. अगर आपकी प्रायोरिटी हेल्दी लिविंग नहीं है तो फिर आपके पास 10 बहाने होंगे. हैविंग सेड दैट, हमारी जो जर्नी है, जो हम एज कार्डियोलॉजिस्ट इवॉल्व हुए, बचपन में हमने कभी सुना ही नहीं था कि यंग लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं. जी जी बिल्कुल. व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो उस समय हम सुनते थे अंकल की एज 55 साल थी, 60 साल थी, 65 साल थी, हार्ट की प्रॉब्लम हुई. जी. एंड व्हेन आई केम टू कॉलेज एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी सॉ children or sons bringing their parents with heart attacks. But now we see parents bringing their young sons with heart attacks. So the whole scenario has changed. So कहीं ना कहीं जो आपने बोला, ये लाइफस्टाइल का मैटर है, ये डाइट का मैटर है, ये इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स का मैटर है, डेंस कैलोरी फूड्स लेने का मैटर है. सो इफ़ वी गो बैक टू आवर बेसिक्स, जो एसेंशियल 3-4 चीज़ें जो हमें करनी हैं, एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एक हेल्दी एक्सरसाइज पैटर्न होना चाहिए, एक हेल्दी स्लीप पैटर्न होना चाहिए, और बेसिकली कुछ चीज़ें जो आपको मेंटेन करनी है, एक हेल्दी वेट, कोलेस्ट्रॉल शुड बी इन द नॉर्मल रेंज, योर ब्लड प्रेशर शुड बी इन द नॉर्मल रेंज, and your sugar should be okay. So these are the basic things. The most common risk factor for heart disease in young people is smoking, and that should be avoided at all costs. Absolutely, very clear do's and don'ts there. Dr. Nayak, talking about the latest recent challenges, we have seen numerous cases, that unfortunate ones, that people are literally falling to death while doing their daily routine work. Now, it has also been guessed or assumed, or at times being published, that COVID-19 could be one of the reasons for these deaths in the young ones. How do you read that? What is the assumption? You see, when COVID started in 2020 March, initially after this started with lungs problem and low oxygen, for which lots of people got admitted, and many people also died, our nearer ones and dearer ones. But with passage of time, we realized that COVID में हार्ट भी अफेक्टेड होता है. जी जी, सिर्फ लंग्स नहीं. हाँ जी जी. क्योंकि कोविड एक इलनेस है, वायरल इलनेस है, जहाँ इतनी ज़्यादा बॉडी में
इन्फ्लामेशन होता है, इम्यून रेस्पॉन्स होता है, और ब्लड क्लॉटिंग जो है प्रोसेस, नॉर्मल बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा अग्रवेट कर देता है। जी जी जी। तो ड्यूरिंग द टाइप ऑफ कोविड जब पेशेंट एडमिट होते थे तो कई सारे पेशेंट का डेथ होता था बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। हमने खुद किया है, हमारे हॉस्पिटल में हार्ट अटैक करके आया है, कोविड पेशेंट पॉजिटिव है, उसका हमने एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाला हुआ है, क्योंकि अच्छा, उस टाइम एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डालने का कोई उस टाइम कोई था ही नहीं, क्लैरिटी था नहीं कि करना क्या चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जो ब्लड थिक हो जाती है और बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, ये इन्फ्लामेशन जो है सारे बॉडी के ब्लड वेसल को इफेक्ट करता है। जी जी जी। तो ये इन्फ्लामेशन के कारण वो क्लॉट बनता है और हार्ट डैमेज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम होती है बॉडी में कोविड के कारण, लंग्स के इश्यूज के कारण। तो ये सारे मिलजुल के हार्ट अफेक्टेड होते हैं, एंड दैट इज ए फैक्ट कि कोविड-19 वायरस जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जो पेशेंट एडमिटेड है, दे आर मोर प्रोन टू डाई बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। हालांकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले है या नहीं है, वो डिपेंड देन करता है। आफ्टर कोविड गॉन, कोविड जाने के बाद हमने ये चीज नोटिस किया है कि कोई लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। तो सडनली उनकी हार्ट बीट बढ़ जाता है, फैटिगेबिलिटी, फैटिग लगता है, चलने से सांस चढ़ता है, ये सारे कोई पेशेंट को प्रॉब्लम करके आते हैं। अच्छा, और हर एज ग्रुप के? कोविड तो चला गया, उसके बाद इवन टिल 1 year आफ्टर कोविड पीपल आर स्टिल कमिंग कि उनको हार्ट बीट बढ़ गया है, दिक्कत आ रही है। अब ये चीज जो अमेरिका या ब्रिटेन में जो स्टडीज किया गया है, ड्यूरिंग कोविड तो हार्ट की प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से भी लोग मरे हैं, बट आफ्टर दैट ऑल्सो, जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं, लंग कोविड, लंग कोविड कहते हैं, मतलब 6 से 8 हफ्ते चला गया, उसके बाद 6 महीना चला गया, फिर भी उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है हार्ट से रिलेटेड। दैट मेजर प्रॉब्लम यही जो ब्लड थिकनिंग हो जाता है, जिसको हम मेजर करते हैं कोई टेस्ट से, जी जी, जिसके लिए हम ब्लड थिनर भी देते हैं कई सारे दिन तक। तो अभी भी वो चीज है। राइट, बिल्कुल। आइए सुनते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, वी आर ऑल्सो जॉइन्ड बाय डॉक्टर हेमंत मदान, सीनियर डायरेक्टर एंड प्रोग्राम हेड कार्डियक साइंसेज, नारायण हेल्थ। Dr. Madan, thank you so much for speaking to us. It's my pleasure to speak to Dr. Kubba and Dr. Nayak here. And what I understand and what our viewers also understand is that the two aspects to it: first, the lifestyle, and secondly, the concern and the basically approach towards COVID-19 and its connection with heart issues. You belong to Narayana Health. Obviously, a lot of research and development is also being done. A lot of patients also come by with different sort of complications. What is your understanding of the impact of COVID-19 on the health of the heart matter? Well, I heard Dr. Nayak's kind of explanation about heart disease and COVID, and I'll take off from where he left. Essentially, COVID can affect the heart in 3 different ways. The first way is that it causes increased clotting in the entire body, which manifests as either a heart attack when it clots on the left side of the body, or it causes something called pulmonary embolism if it clots on the right side of the body. So that's the first manifestation, increased clotting. The second Dr. Nayak alluded to is changes in the heart rate. We've noticed both very fast heart rates and very slow heart rates in patients with COVID. I don't think there is yet very clearly published data on this, but the general clinical feeling that I have is that younger patients have often presented with slower heart rates, and older patients have tended to present with fast heart rates. So, if we were to form some kind of a clinical impression, slower heart rates have generally been more prevalent in the younger population. Right. So that was the second manifestation of COVID, which is changes in the heart rate. The third manifestation of COVID is that it's directly affected the heart muscle because, as Dr. Nayak alluded to, it affects the heart muscle directly because of inflammation, because of autoimmune processes, damages the heart muscle directly, and therefore leads to a weak pumping action of the heart, which in our language
is called viral myocarditis or it's called dilated cardiomyopathy. So तीनों तरीकों से हार्ट को अफेक्ट होता है. Clotting के mechanism से, which I've told you, both on the right and the left side of the heart. Right. Problems of electrical system of the heart, which causes again both fast heart rates and slow heart rates. And the third is direct effect on the heart muscle. I also want to bring up an ancillary point here, which is about the role of vaccines and heart disease. Lots and lots of people have asked me, "Ke Doc Sahab, ye sara kuch vaccine se to nahi hua?" Have we got affected because of vaccine? I'm sure you've also heard it in society. Definitely. And in kind of colloquial text. Yes. First thing is we must understand that COVID, we haven't yet had time to analyze various aspects of COVID. The disease has been around for about say 3 years now. 3 years in medical history is a very short time to analyze the long-term effects of any particular disease. So whatever I say must be qualified by saying that analysis of data is not yet very robust, but whatever data has been published has been very clear that COVID vaccine itself has not caused that much of harm to the heart directly. Right. So, in that sense, the vaccines are pretty clear. The mRNA vaccines, as well as, all other vaccines that we've used, that COVID vaccines have not been, they've studied, of course, when we take it in the entire perspective of the disease where millions and millions were affected, and you've analyzed, say, 8,000 or 10,000 patients, it's a very small number. Right. But then whatever analysis has been done, the direct relationship of vaccination with heart disease has not been implicated. Established. So in that sense, and many people who were vaccinated also had COVID in the past. So, where do you say that this is because of vaccine or this is because of COVID disease per se? So it's very difficult to analyze this, but there's no robust data to say that directly connected vaccine caused heart disease. Yes. No, it's a very, very big, clarification, sir, I would say, and it gives a lot of hope also in order to find the root cause, to get the right medication, to consult the correct practitioners also, and not just thinking that it is the vaccine that is actually causing us disease. Dr. Madan, please stay with us. Dr. Samir Kubba is there. Interventional cardiology, sir. This is one term I'm sure our viewers would also want to know more about. Also, besides that, please also share with us at what time, at what stage do you believe, or is it regularly that we should be consulting cardiologists for our heart's health? I think we Indians must understand that are at a higher risk of heart disease, especially heart attacks and blockages in the coronary arteries, about 10 to 20 years earlier than the Western population. Okay. So if somebody in the West has a heart attack or a heart disease at the age of 60, so our people will have at the age of around 50 or 40. Earlier than them. And going to my previous comment that during my training days, I used to see sons bringing their fathers with heart attacks. Now we see the opposite. All right. So there is no clear cut guideline which says कि आपको इस एज पे चेकअप्स करवाने हैं. अच्छा. परंतु अगर आपके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव, जैसे ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आप डायबिटिक हैं, आप हैवी स्मोकर हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है प्री मेच्योर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की, यानी आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर में किसी को अगर अर्ली एज पे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उनको भी है. अगर हम पैटर्नल साइड पे देखें तो 55 इयर्स से पहले अगर आपके फादर को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई, अच्छा, या आपके ब्रदर को हुई, तो आप ऑटोमेटिकली एक हायर रिस्क पे हो जाते हैं. अच्छा. ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है. और मैटरनल साइड पे देखिए, अगर आपको मदर को अराउंड 60-65 पे हुआ या आपकी सिस्टर में 60-65 पे हुआ, तो अगेन आपका रिस्क बढ़ जाता है. अगर आप हेवी स्मोकर हैं, रिस्क बढ़ जाता है. आजकल ब्लड प्रेशर बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, साइलेंट किलर है. जी. लोगों में 25 साल 30 साल पे भी ब्लड प्रेशर हो रहा है. जो आजकल हमारा वर्क प्रेशर है, हमारा वर्क स्टाइल है, हमारा खाना पीना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, चलना फिरना कम है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है. कई बार ब्लड प्रेशर की पहली मैनिफेस्टेशन हार्ट अटैक होती है, या किडनी फेलियर होता है, या स्ट्रोक होता है. राइट.
सिमिलरली डायबिटिक एक साइलेंट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ टेस्टों में ही पता लगता है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। जी 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 जी। सो बॉटम लाइन ये है कि मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट 40 साल की उम्र पे तो चेकअप बेसिकली होने चाहिए, बट अगर अच्छा। रिस्क फैक्टर्स आपके ज़्यादा हैं तो मे बी 30 ईयर्स की एज पे भी, और अगर आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो प्रोबेबली अर्लियर। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए अराउंड 1-1.5 महीना पहले, 42 साल के हैं, एंड वो यूके में रहते हैं और वो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे थे घर पे। अपरेंटली हेल्दी हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना कोलेस्ट्रॉल है, और ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते हुए उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अच्छा। वो इमीडिएटली हॉस्पिटल गए, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, 2 स्टेंट पड़े, हार्ट की पंपिंग में वीकनेस हो गई। वो इंडिया ट्रैवल कर रहे थे तो किसी के थ्रू मेरे पास ओपिनियन लेने के लिए आए। जी जी। और जब मैंने उनसे बात करी तो सिर्फ एक ही रिस्क फैक्टर पता में आया कि उनके फादर साहब को 55 साल की एज पे पहला हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। एंड 66 की एज पे उनके फादर की डेथ हो गई, और इन 11 सालों में फादर को 4 हार्ट अटैक्स हुए। ओके ओके। सो अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो ऐसी सिचुएशन में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपके प्रिवेंटिव चेकअप्स अर्ली होने चाहिए, क्योंकि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो जाते हैं। जी। और सिर्फ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं होती, कई बार आपका लाइफस्टाइल भी शेयर्ड होता है। जैसे आपके फादर जो खाते हैं या आपकी मदर जो खाती हैं, आपके घर में वैसा खाना बनता है। सो फैमिली हिस्ट्री एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने लाइफस्टाइल को अर्लियर चेंज कर सकते हैं। तो इनका कंसर्न ये था कि मेरे को अगर हुआ तो कल मेरे बेटे को भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली इट रन्स इन द फैमिली, या मेरी वाइफ को हो सकता है। सो वी कैन एक्चुअली इनकॉर्पोरेट healthy lifestyle options early in life, and possibly maybe such young people who have a strong family history of coronary artery disease, maybe they are tested early, and now we have good tests, at least the blood test etc, and certain tests like CT angiography or the TMT, ये सब करके हम उनका रिस्क एनालाइज कर सकते हैं। अगले 8 से 10 साल में उनका रिस्क कितना है वो एक ऑनलाइन ASC रिस्क कैलकुलेटर्स होते हैं, और उसके बेसिस पे हम उन्हें डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में एडवाइस दे सकते हैं, और कुछ दवाइयाँ भी शुरू कर सकते हैं, जैसे स्टैटिन्स होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और हार्ट के ब्लॉकेजेस को स्टेबल करती हैं। तो इंटरवेंशन एट the correct time is also one of the key factors, and as Dr. Kubba mentions that yes, I mean, if you have a family history and if there is more to it than what meets the eye, then meeting a cardiologist is the right decision. Dr. Nayak, you know, it is very clear now that जो बात दिल की है, जो बात हार्ट से रिलेटेड है, it's not just only about the heart, it's about a lot of things, as Dr. Kubba also mentions, and plus including cholesterol, and as you also mentioned, thickness of the blood and rest of the things. Now, talking about technology, I mean, we are hearing a lot about the robotics aspect that has come into treatment of heart diseases. What is India as of now working on, and do you believe that we have as of now competitive technology as compared to the you know, technology that we generally see in the West? You see, if you'll go back to 30 years back or something like 40 years back, most of the persons from India, they used to go abroad for heart surgery. Yes. Or putting a stent in the arteries, because that was in the nascent phase. And we, even we are Indians, we had less faith in our Indian doctors. Yes. But the digitalization and everything has changed. Because of this culture, even Indian doctors are at par, they are doing excellent job in the field of interventional cardiology, say, Right. or during doing pacemakers, doing whatever the high technological challenges what we are facing, the Indian facing, thinking that these are not possible here, we should go abroad. But that thing has changed now. Wow. If you will see now, people from abroad are coming to our hospital to get treated. Absolutely. Medical tourism is also picking up in India. Yeah, Absolutely. because of this media coverage, not only media coverage, because of the excellence. You see, if you are doing certain things in a regular way, then definitely you will become an expert. Definitely, definitely. And so, one thing it is developed in West, it does not mean that people over West are all the excellent, but the excellence has come to India. Now, Indian doctors are very good at it. And
so far, if we will speak about stentings, pacemakers, and other complex surgeries, we are doing very well here. Absolutely. It's very heartening, very If heartening you to hear. Yes. if you see in Narayana Health, we have done in Bangalore around 810 surgery in 1 month. Bypass surgery in 1 month. My mathematics gave away just to calculate how many in one day, but 810 in 30 days. I'm just because telling this. No, because absolutely. I am telling this because Kudos to you. in America, in this big institute like Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Right. even right. they are doing also similar number of cases. No, It's a very good number. Every day number, they are yes. doing 20-25 cases. So how you can do so many cases if you are not confident in doing them? Right. And without any mortality and something like that. But the best thing is that people in India, they have started having faith in Indian doctors. Right. That is more important. That's more important. If I don't have faith in you, then I will not go to you. True. So I that mean, has it's come. pretty evident from a lot of You data see also. about COVID. For an example, COVID. Right. How we managed. Such a huge population, such a Absolutely, huge number of absolutely. disease, and India was the first to get vaccinated Vaccine. Yes. among many countries. Almost Technology has advanced a lot. It is not like that. Definitely. One has to give it to India as far as medical aspect is concerned, no doubt. And Dr. Nayak, Dr. Kubba, and Dr. Madan, I mean, I might take time out to, just to acknowledge and salute you guys, what a human's job you and your team did during the COVID-19 period. Thank you so much for that. Coming to you, Dr. Madan, we have seen in the past also how the issues related to the matters of health, heart have evolved, have changed. Narayana Health obviously is one name, I would say, that has been making strides towards achieving more better technologies, better compliance, and better service delivery, if I may say so. What are the key aspects that you would suggest to a patient who is a heart patient, I would say, to bear in mind so that, the situation does not escalate further, and some do's and don'ts and tips for those who are actually heart patients? That's a pretty long and kind of a wide question. So let me try and abbreviate it as far as possible in about 2-3 minutes. Sure. The first is, I often like to divide this aspect into two different parts. The first is the medical aspect, which we've discussed more or less: preventive health checkups, right, looking after your heart, being acutely aware of the kind of risk factors that you tend to run. I just want to qualify one or two, relatively understated risk factors. Dr. Samir Kubba mentioned in great detail about hypertension, about diabetes, about smoking. But I think there are a couple of risk factors which we underestimate the importance of. Unfortunately, they've not been studied that well. One is air pollution and its effect on the heart. There is probably a very clear association of air pollution and its effect on the heart. But again, as I told you, air pollution does not figure in the major risk factors for heart disease, and probably it's not been studied as well as it should have been studied. The second is high stress level and heart disease. Again, something which is very difficult to quantify. How do you quantify? It's very easy to quantify the number of cigarettes that a man smokes. But how do you quantify internal and external stressors in a man's life? Right. But we all know that urban Indian living is highly stressful. Particularly in a high speed, high challenge metro kind of a living. Even when you're on leave, you're not really on leave. So high stress and heart disease is something that we need to look at very carefully. And as individuals, we need to modify our lifestyle so that our stress levels come down. And the third thing which we've rarely looked at is sudden bursts of exercise. Right. What we must understand is that
uh, exercise and body toning takes a lot of time and lot of effort. It's not that we can suddenly become an exercising nation, or as an individual we can suddenly decide to become a marathon runner when we've not actually been running at all in our younger days. And the case that Dr. Samir mentioned, we've seen innumerable cases where a person goes for a very aggressive exercise schedule, and then within a couple of hours he comes with a heart attack. So what I'm trying to say is that one, identify your risk factors. Even if you want to run a marathon, spend some time in trying to train for it. Right. And certainly eliminate some risk factors before you decide to, what I mean, it's not it's not against malice, with malice against any particular ideology. But most of us try to be good students when we are younger. When we land up at 40 years, when we think that we've arrived in life, that's the time when we want to chase our hobbies, and one of the hobbies is running long distance or cycling long distance. Very true, very true. The point is between 20s and 40s, which is where your muscles should have been toned up. We've actually not spent any time trying to tone up our muscles. So suddenly, there's a kind of I call it the corporate life challenge. You suddenly feel challenged that and various people, various society influences expect you to run, and then you run for 20 kilometers, or you cycle for 80 kilometers, and then you land up with trouble. So these are three additional concerns which I often have. I educate my patients about these, in addition to the conventional risk factors. There are a lot of conventional well-defined risk factors. These are risk factors which are not so well-defined. That is air pollution, the amount of stress in our lives, and sudden bursts of extreme exercise. Right. There's also a bit of, if you give me a minute, there's also a bit of philosophical aspect to the whole thing. The philosophical aspect which I often educate people is that, we cater to all physical and materialistic aspects of our life. When we are 25, we want to own a laptop. When we are 30, we want to own a car. When we are 35, we want to be owner of an apartment. Unfortunately, as a society, we hardly plan for our healthcare. True. So it's sometimes very sad to see that people come with heart attacks with no arrangements or no kind of backup plan having been made as to how will they cope if they have a cardiac problem or if they have a health issue. So actually, I've started telling people, people from middle class and people who otherwise do not have a health package subscription, that rather than gifting your children mobile phones or gifting your children expensive toys on their birthdays, what I would seriously ask you to do is to give them a health insurance package and renew it every birthday. It doesn't cost much when you take it when you're younger, but this is a philosophical aspect that I want to drive home, that each and every person in society must have some kind of a health coverage, whether it's through the government sponsored things like Ayushman Bharat, which is a wonderful scheme, or it's through some government, state or central government sponsored schemes, or whether it's your own personally procured health insurance. But we must cater for it as an individual. It's our individual responsibility, and we must also ensure that our children are protected. Right, absolutely. Dr. Madan, very wise words, I would say, and coming from you and your team here in our studio, obviously makes a lot of sense that, Hindi mein they say कि अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नई परिपाटी, कि जब तक ज़िंदगी ऐसे ही चल गई है तो आगे क्यों. लेकिन before that, if timely intervention is being done, and Dr. Kubba, as Dr. Madan also suggests, reaching 40 and then doing something maybe under the pressure of corporate gym membership or the weekend cycling events that are being organized, it is better. And in your opinion, what is it that our friends in the age group of say 25 to 35, let's keep the ambit bigger, what is it that they can do
apart from a bit of regular exercise, what is it that they can do to avoid a situation of this sort beyond 40? I think there's a very interesting concept by the American Heart Association, but that holds true for us also, especially because we have heart disease at a younger age. Right. That is known as the life's essential 8. Okay. Which basically means 4 healthy behaviors and 4 healthy checkups, heart health checkups. So healthy behaviors are a good diet, which should be more of plant-based diet. It should be more of whole grains. Outside food must be avoided as much as possible. Saturated fats, बाहर का खाना जो आजकल बहुत कॉमन कल्चर है. 25 से 35 की एज में करना थोड़ा मुश्किल जरूर है. मुश्किल जरूर है. हाँ, जैसा कहा डॉक्टर साहब ने 40 तक आते आते तो हो जाता है. बट आई थिंक जैसे डॉक्टर मदान ने बोला, ये भी जो भी फैक्टर्स हैं ये एक बचपन से फैमिली में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए. अच्छा. एक्चुअली हेल्थ पैटर्न्स और हेल्थ बिहेवियर्स बचपन से शुरू हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि हमारी इंडियन मदर्स का बहुत कॉन्सेप्ट है, ये खा लो वो खा लो, एंड probably their way of expressing love is food, especially for male children. So I think that pattern and that thought process needs to change. आपने देखा होगा जिस परिवार में लोग पतले हैं सारे पतले होते हैं, जहाँ मोटे हैं वहाँ सारे मोटे होते हैं. जी जी जी. जिनके फ्रेंड्स पतले होते हैं वो पतले होते हैं, जिनके फ्रेंड्स मोटे होते हैं. तो यू चूज योर कंपनी अकॉर्डिंगली एंड योर पैटर्न्स, योर सोशल लाइफ. जो लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं उनके फ्रेंड्स के भी इसी तरह की बॉडीज़ होती हैं एक्सरसाइज करने वाली. सो ये एक बहुत अर्ली इंस्टीट्यूट करना ज़रूरी है. और बहुत ही अच्छा पॉइंट डॉक्टर मदान ने बोला कि इंस्टेड ऑफ गिफ्टिंग देम अ मोबाइल फोन और टेकिंग देम टू अ मैकडोनल्ड्स ऑन अ बर्थडे, इंस्टिल एन हैबिट ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्दी हैबिट्स. सो आई थिंक बचपन से वो होना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़, एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. अगेन द कॉन्सेप्ट हैव्स टू स्टार्ट इन चाइल्डहुड. मशीन होती है, उसकी भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है. हमारी बॉडी एक मशीन है और मैं कहूँगा कि भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत रेजिलियंस दी है. हम जब तक अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ना करें, बॉडी 40-45 साल तक आपको प्रॉब्लम देती भी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन 40-45 साल पे अचानक प्रॉब्लम्स क्यों आनी शुरू होती हैं? क्योंकि आपने पिछले 10-15 साल में उसका ध्यान नहीं दिया. और सडनली जब, जैसे डॉक्टर मदान ने बोला, आपको बेसिक चीज़ें लाइफ में मिल जाती हैं, आपको एक अच्छा करियर मिल जाता है, आपकी गाड़ी अच्छी हो जाती है, आपके बच्चे ठीक ठाक स्कूलों में जा रहे होते हैं, सडनली आपको एक लगता है कि अब मेरी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, मे बी समथिंग बिगर दैन व्हाट यू नॉर्मली एस्पायर फॉर. राइट. सो आई थिंक ये एक पैटर्न, एक माइंडसेट का पैटर्न. एवरीथिंग इज इन द माइंड. सो इफ यू हैव अ पैटर्न ऑफ अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज पैटर्न एंड हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न. आज की डेट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अगली दिनों में होने वाला इस मिलेनियम का है, वो 2 चीज़ें होंगी, डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर्स. हमारे बच्चे रात को नहीं सोते, मोबाइल फ़ोन चलते रहते हैं. जी. स्लीप इज़ अ टाइम ऑफ हीलिंग ऑफ द बॉडी. इवन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी कहती है कि 7 से 8 घंटे सोना चाहिए. एंड अ हेल्दी क्वालिटी ऑफ स्लीप, अ गुड स्लीप पैटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हीलिंग योर बॉडी. बेसिकली अगर आप देखें, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमें इस पर बहुत डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है. जी बिल्कुल. बट वी हैव टू गो बैक टू आवर बेसिक्स एंड चेकअप्स. जैसे बताया, आज की डेट में, और कोविड पैंडेमिक ने हमें सिखाया कि एक बीपी इंस्ट्रूमेंट घर में होना चाहिए. बिल्कुल. एक शुगर इंस्ट्रूमेंट घर में होना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल आपको चेक करना चाहिए, बिकॉज कई बार कोलेस्ट्रॉल के कोई सिम्टम्स नहीं होते और पहला सिम्टम इज अ हार्ट अटैक. बिल्कुल. So I think these are very very basic things. Indeed. And I think everyone knows it. The idea is we have to follow it. Bilkul. This is a very pertinent issue that Dr. Kubba mentions, and trust me, I'll be very honest and I'll admit that these are the same things that we hear again and again, but no one does it. And that brings me to the aspect of the psychological part of it, Dr. Nayak. आप लोग हार्ट के डॉक्टर हैं, हार्ट के एक्सपर्ट्स हैं, बट मुझे लगता है बहुत हद तक आपके शब्दों से, आपकी बातचीत से और आपके इंटरप्रिटेशन से भी पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है. फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रॉम योर नॉलेज ऑन दीज मैटर्स, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी, एंड वंस यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, what is it that you tell them and what is it that actually works other than the clinical part? You see, it is very difficult to accept that a 35-year or 30-year-old man, young man, he had a heart attack. Absolutely. अगर कोई इतना कम उम्र में ये कोई हार्ट अटैक की बीमारी
उम्र थोड़ा ना है। जी 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 बिल्कुल। अब इतना कम उम्र में किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसका फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता है, वो खुद एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके कारण कई लोग बहुत बाद में भी आते हैं। अच्छा, हार्ट अटैक हो जाता है लेकिन उसके बाद आता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, उसके दोस्त भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये होता है। और जब वो एक्सेप्ट करते हैं और जब उनको पता चल जाता है कि हाँ मुझे हार्ट अटैक हुआ है, तो दैट वाज ए रियली सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर देम, नॉट ओनली फॉर देम, देयर वाइफ और हस्बैंड, सन्स, डॉटर, एनीबॉडी, फैमिली मेंबर्स। तो रियल नेचुरली, बिकॉज अगर if somebody like 35-year-old man is having a heart attack, he is the only breadwinner of his family. So you can see the small kids. एक एग्जाम्पल अभी दूंगा, he was just 32-year-old man and he had a heart attack. और उसका बीवी जस्ट क्राइंग कि मैं छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सारी चीज़ आप जब जाते हो ट्रीटमेंट करने के लिए, आपके दिमाग में ये चीज़ रहता है बिल्कुल कि मुझे इसको ठीक करना है, कैसे भी हो कोशिश करना है। कि हम ऐसे नहीं है कि मुझे ठीक करना ही करना है, लेकिन कोशिश करना है कि अनदर थिंग आई विल टेल यू, जब पेशेंट कोई भी होता है, जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, वो उसको बच्चे की तरह ट्रीटमेंट करता है, अपने बच्चे की तरह ट्रीटमेंट करता है। चाहे मीडिया में चाहे कहीं भी कुछ बोले, डॉक्टर के बारे में गलत बोले, जो भी है, बट जब भी कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो 80 साल का आदमी हो या 20 साल का हो, उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीटमेंट करता है। वो चाहता है, कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ पेशेंट ठीक ना हो। अगर वो ठीक होगा 5 लोगों को बताएगा। तो ये जो हार्ट अटैक में जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, इट हैज टू बी वेरी सीरियसली एंड वेरी सीरियसली इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एब्सोल्युटली। आपको पेशेंट का साथ देना है, उनको पॉजिटिविटी दिखाना है कि कुछ नहीं है। हम पेशेंट कुछ कितना भी सीरियस हो, हम यही बोलते हैं तू ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। उसको पॉजिटिव का दिखाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है। जी जी जी। कई बार पेशेंट्स होते हैं, जैसे स्मोकर है, उसको हार्ट अटैक हुआ है और वो पड़ा है बेचारा, 3 दिन से स्मोकिंग नहीं किया है। तो ये एक अच्छा टाइम होता है स्मोकिंग छोड़ने का। जी 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 जी। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं तुम पीते रहो, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो वो भी एक दूसरी तरह इफेक्ट पकड़ता है, कहता है कि नहीं मैं छोड़ दूंगा। बिल्कुल। और छोड़ भी देते हैं लोग। अब मानिए अगर 100% स्मोकिंग पेशेंट हार्ट अटैक होकर आता है, 70 तो छोड़ ही देते हैं, कुछ लोग छोड़ नहीं पाते हैं। जी जी। तो ये सारी चीजें उनको उनका साथ रहना है, सिर्फ मुझे नहीं, डॉक्टर नहीं, उनका फैमिली को साथ में रहना है, सबको साथ में रहना है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कीपिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड कीपिंग also yourself together is something very important. Dr. Madan, final word from you before we wrap up this show. Obviously, again talking about the young age, जब youngsters दिल की बात करते हैं तो अक्सर when we go back to our college days तो हमें लगता है कि दिल लगी और दिल की बात कर रहे हैं, but these days it has become assumed another significance also. Your message to the youngsters especially, and I really admire, and I'm sure our viewers also agree, that this concept of gifting a health insurance is not at all impossible to your loved ones. And trust me, I mean, if that is something that I needed to do, I would have done it for my daughter and my kids right away. Please go ahead. Final word. Final word. First, thanks to you. I mean, at least I've motivated one person to follow something which has been, kind of. I've been telling many people, and many people who've chosen to listen to me. Final word is just a couple of very simple lines. Eat well, exercise sensibly. Don't over exercise. Cut out smoking completely. Have alcohol only if you're kind of if you're a very controlled social drinker. Otherwise, don't have alcohol at all. And most importantly, try to acutely identify stressors in your life and cut them down. Right. So these are very simple messages for a healthy lifestyle, and invest in a good preventive health checkup program, which will depend, as Dr. Samir identified, which will depend on what your risk profile looks like.
So it's, you know, it's basic mantras of life. It's something that you would do for your car. It's something that you would do for anybody or anything at home. You know, look after these things and they'll last longer. Absolutely. Absolutely. So, and you know, and finally, I mean, there's nothing more important about the statement than in cardiology that an ounce of practice is better than a ton of theory. So listen, when you listen to all this gyan, don't just you know, close it up and No. Actually, practice a bit. indeed, and that's how I think it is done. And as we say, you know, those who would be mentioning that, you know, we all agree that exercise and everything is mandatory. Trust me, I think all of us here are ready to admit that yes, we are going to embark on that treadmill, which might be gaining dust. But nonetheless, gentlemen, Dr. Zab, thank you, Dr. Kubba, Dr. Nayak, Dr. Madan, thank you so much for talking to us. Narayana Health obviously doing a yeoman's job as far as taking care of the health issues is concerned. And to our viewers, well, I mean, something that you can always take away from this show is that commitment towards yourself, because at the end of the day, I believe it's you who is going to take care of your family. It's you who is going to take care of yourself and of your health. Thank you for taking time out watching this show. Please, Dr. Saab. इतनी चीज़ें डिस्कस हुई और डॉक्टर नायक ने बहुत अच्छा बोला साइकोलॉजी के बारे में. पेशेंट की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, डॉक्टर की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है जब आप एक एक्यूट हार्ट अटैक को डील करते हैं. और आजकल की दुनिया में हम लोग सब सोशलाइजेशन भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं. बिल्कुल. और इनफैक्ट इससे मुझे एक शेर याद आता है कि इरशाद. खोल दिया होता दिल अगर यारों के संग, वाह वाह, तो आज ना खुलवाना पड़ता औजारों के संग. देखिए, So I'm not saying that we must not look after risk factors and our risk behaviors, but I think खुला हंसना, लोगों से मिलना जुलना और शिकवे गिले ना रखना, ये सब चीज़ें अपने आप से स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली कट करती हैं. जी. और दोस्तों का बहुत रोल होता है लाइफ में. तो आई थिंक हम बहुत सारी चीज़ों के लिए भागते रहते हैं, बट आई थिंक बेसिक चीज़ों पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो मुझे लगता है हार्ट अटैक्स बहुत कम हो जाएंगे. चलिए, कंटेंट, टू बी कंटेंट is also the key. Thank you so much. On this Shairana note, we take your leave. Thank you so much for watching this space. When a patient's mother touches my feet, begging to save her child's life, I don't feel empowered. I feel humiliated. To normal people, the doctor is somewhere in between us and the God. I'm just an instrument in the hands of God. What you have initiated in making healthcare affordable to Indians. India will become the first country in the world to dissociate healthcare from affluence. To do the right thing, there's only one reason needed, which is intent. We are pieces to solve all the problems. Someone has to put it together. This is the story of India. Duologue with Barun Das featuring Dr. Devi Shetty. World premiere on Connected TV. Tonight at 10. Only on News9 Live. India's first and only digital exclusive English news stream for Connected TV. Powered by Tata 1MG Labs. Supported by Alliance Broadband. I don't know if people get divided that easy. The old system must change, and this is kind of disruption. Just on controversy, a film cannot sustain so long. Whenever they ban anything, it becomes a discussion amongst the elite of the society. Everybody becomes a judge. Everybody starts passing a comment. These films belong to this new Indian cinema, and which is coming as an alternate to a typical zamindari style Bollywood system. We have not added fuel to the fire. V.C. Shukla used to be the INB minister. He is said to have set the negative, complete negative on fire. They have been trolling me, they have been threatening me, abusing my family, harassing my daughter. My problem is